एनालिटिक्स को समझना। इसके अंदर में हम लोग क्या क्या समझेंगे। फर्स्ट विल बिगिन विथ इन्वेस्टमेंट आइडियाज, देन वी विल हेड ओवर टू एज रिपोर्ट्स। पोस्ट दैट वी विल हैव सम like look at the investor portfolio, investor themes and company filings. फिर हम लोग थोड़ा बहुत एसएमई जोन और एज इनसाइट समझेंगे एंड वील रैप बाय अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल फंड सेगमेंट एंड थोड़ा बहुत सोशल में कैसे आप पोस्ट करते हो और आप वेब से सोशल के प्लेटफॉर्म में कैसे जा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द प्लान फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। सो टू बिगिन विथ, लेट्स फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट आइडियाज। सो ये प्रीमियम एनालिटिक्स के अंडर में आता है। सो इफ वी क्लिक ऑन दिस, it will take me to a series of names of companies. Now these companies, हम लोग इसके जो हमारे इन हाउस एनालिस्ट हैं वो they sit and they decide on suo motu basis on which companies they feel like that it is good for long term purpose, and on that they prepare the research reports, right? So here we have a series of names such as Tata Lexi, Page Industries and others. तो यहाँ पे first there is a small PDF attached which talks about key case study. So एक बार हम लोग इसको attachment में जाके देखते हैं what is it all about. So this explains prima facie ki what is the company about or how it has performed in this particular time frame. उसके बाद हम लोग report में जाएंगे। तो report में there are certain parameters and based on that we give scoring. This is again in-house and post which there are parameters पे हम लोग score करते हैं and यहाँ पे key levels determine करते हैं through internal valuation, and we then finally arrive at the total score. So here in Tata Lexi we have provided a score of 24 out of 30. So यहाँ पे देखते हैं हम लोग जैसे कि few parameters है, जैसे growth है, profitability, efficiency, solvency. तो इसके हम लोग क्या करते हैं, we judge it how the company has performed in the past, how it has performed in the present, and how it is going to perform in the future. Now keeping in three of these parameters in mind, we score the company on basis of, say, this set metrics like growth, profitability and efficiency and others. So once done, now let's see what is. So ये हम लोग को X score समझ में आ गया है, right? तो अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, we see these bands. अब ये bands क्या है? जो वैल्यूएशन मेट्रिक जो स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, इंटरनली वैल्यूएशन करके हम लोग अपर बैंड एंड लोअर बैंड जोन्स निकालते हैं. Now the green zone depicts the accumulation points for this particular stock, and similarly the red zone depicts the distribution zone for this particular stock. जब भी हमारा स्टॉक इस प्राइस के पास आएगा, ये ग्रीन बैंड के पास, that depicts कि हमें accumulate करना चाहिए, and since these are for long term purposes, it's all more than 3 years time frame, right? So whenever the red zone पे आया, so we can start distributing or we can offload some part of our portfolio depending upon our risk appetite. Now again we'll see the spider chart, वही parameters है, and parameters में we see the scoring. Now the key level. So I'll just take you back to this case study. Just a second. And here's it's written the zone of 6,000 to 7,000 acts as a strong base, right? And यहाँ पे हम देखेंगे ये 7,000 लिखा हुआ है, and the company stock is trading very close to this particular key level. अभी last trading price था 747. So ये like the key level और LTP के जो difference है, that is depicted by this gap. And the moment the gap, whether it's on the about the red band or the green band,
जो लोएस्ट रहेगा, जो गैप का जो मिनिमम रहेगा, तब वो कंपनी टॉप पे आ जाती है, राइट। से सपोज अगर कोई कंपनी है जो अभी रेड बैंड के एकदम क्लोज में जोन कर रही है, से अबाउट 0.2%, तो शायद तो वो टाटा लेक्सी के ऊपर आ जाता। होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। इफ नॉट, प्लीज फील फ्री टू put out questions. Uh, so, somebody asked like how frequently the stocks are analyzed. This gets updated every quarter. So you can see that every quarter this gets updated. And sometimes अगर मैं आपको एक recent का मैं show कर रही हूँ, अच्छा टाटा लेक्सी में show कर रही हूँ, where is it? Take a longer time frame. सो आप देख सकते हो कि री रेटिंग भी होता है। लाइक अर्लियर वी इनिशिएटेड टाटा लेक्सी विद 23 एंड देन इट मूव टू 24। सो इसमें री रेटिंग भी होता है, एंड एवरी क्वार्टर दिस गेट्स अपडेटेड। Okay, I'm clear with the cap and clear with the LTP. So once more, I'll take an like example of a red zone. So things are clear. Say Aisha Motors, right? I'll take a longer time frame. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि द कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द रेड बैंड। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, राइट। सो दिस इज द रेड जोन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब यहाँ पे इस लेवल पे आए, सो बी अ लिटिल कॉशियस एंड यू कैन, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, you can start booking your profit, and or you can exit in tranches. This was about investment ideas. Now let's see कि हमारे जो इन हाउस रिसर्च टीम है वो कौन कौन सा रिपोर्ट्स एज रिपोर्ट्स के अंडर में पब्लिश करती है एंड हम उससे कैसे फायदा ले सकते हैं, राइट। सो एज रिपोर्ट्स में हम जाएंगे एंड देयर सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स वी कैन सी हियर। यहाँ पे एक ऑल का टैब है and here we can filter it all out also. Say suppose I want only focus on case studies, तो मैं यहाँ जाऊंगी तो मुझे जितने भी केस स्टडीज हैं डेट वाइज जो अपडेट हुआ है उस पे मुझे लिस्ट पूरा मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली देयर इज सम वेरी इंटरेस्टिंग विच इज द कॉन एनालिसिस। नाउ अभी कॉन कॉल का सीजन है, एनालिस्ट लाइक सारे कंपनीज अपना एनालिस्ट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। सो व्हाट वी डू इज दैट those con calls are say 1 hour long or 1.5 hour long, and the transcript में भी आने में time लगता है, and even if the transcripts come out it's like 50 minimum 15-20 pager का होता है। So some people don't have time to go through it and read line by line. So what we do is we prepare it in house. यहाँ पे आपको एक AI generated सेंटीमीटर भी मिलेगा जहां से आपको स्कोर पता, लाइक नेगेटिव सेंटीमेंट है या पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो आपको समझ में आएगा। एंड इफ यू क्लिक ऑन द रिपोर्ट you get the entire like 1 hour long like call concised in 2 or 3 pager report. So आपको मेजर हाइलाइट्स जो होता है कॉन कॉल का, दिस इज रिटन डाउन हियर समराइज्ड फॉर्म में। सो आप इसको गो थ्रू करने से आपको मेजर हाइलाइट्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मिल जाएगा। सो द थिंग्स बिकम प्रिटी मच इजी। So this is also done on quarterly basis. Another report which I find is very important and very useful, that is the our IPO notes. So last जो IPO था वो भारतीय हेक्साकॉम पे हम लोग ने पब्लिश किया था। Let's go through it and see, understand कि कैसा क्या है and what is all there inside this particular report. So the first thing you see here, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में है एंड उसके बाद एक सेंटीमीटर स्कोर है, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा हाउ दिस पर्टिकुलर आईपीओ इज गोना परफॉर्म और हाउ इट वी फील इट्स गोना बी लाइक, whether it's poor or average, good or excellent. Then we view the report. So IPO note में first thing is overview about the company, उसका financial highlights, issue related details,
देन अबाउट द कंपनी में एंटायर डिटेलिंग्स, सेक्टर जिसमें वो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, द मेजर वन कॉम्पिटिटर के साथ इसका प्लेसमेंट कैसा है, लाइक हाउ इट इज परफॉर्मिंग vis-a-vis its competitors that are there in the market, फिर प्रोमोटर बैकग्राउंड चेक एंड उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो आईपीओ में तो कौन कौन से रिस्क आपको फेस करना, लाइक यू हैव टू फेस और लाइक दे कैन बी देयर इन द इन्वेस्टमेंट, देन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, other financials highlights, and the best part is here is the SWOT analysis of this particular IPO. So आपको यहाँ पे strength, weaknesses, opportunity, threats highlighted मिल जाएगा. And here we comes with the timeline. So everything is done. The IPO आपको बाहर दूसरे जगह से या कहीं से various places से आपको collate नहीं करना पड़ेगा. Under one report we have provided the entire thing. So you just have to open and read it and you get the entire like information on the particular IPO. I'll just check if there is any question. So the parts are the IPO reports are, as I've stated earlier, all these reports are prepared on suo motu basis. So we cover only those companies where we feel like, that the investors will benefit out of the same. And accordingly, we prepare the reports. Now, infographic and stocks to watch particularly pertains to technical, so I won't be talking about it. Let's focus on infographic. Now, here infographic comes with a mixture of both technical and fundamental. So हम लोग fundamental में थोड़ा सा focus करेंगे. So जैसे कि यहाँ पे आया major real estate companies जिसके pre sales growth बहुत अच्छे हुए हैं और आपको उसका revenue, pre growth sales and pre sales growth सब यहाँ पे depicted मिल जाएगा. All right. Just a sec. By mistake I've closed the app. Just a sec. Yeah. Now, once we are done with the edge reports, now let's focus on the investor portfolio. So, investor portfolio क्या होता है कि there are two divisions to it. एक individual जो आपको पहले दिखेगा and second is institutionals, right? So, they are ace investors. We are pretty much aware कि they are ace investors जो इन्वेस्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियोज को हम लोग समटाइम्स रेप्लिकेट करते हैं एंड समटाइम्स अगर वो किसी कंपनी से एंट्री या कंपनी में एंट्री या एग्जिट लेते हैं तो स्टॉक प्राइस में चेंजेस आते हैं. वी आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ इट, राइट? So what we have done is we have collated all those individual as well as institutional ace investors under the investor portfolio segment. So अगर हम लोग फर्स्ट में क्लिक करते हैं which is राकेश झुंझुनवाला and associates, what we get to see is a very good snapshot. Now what this snapshot talks about, number one, the estimated holding amount. First आप यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे the estimated holding amount है. Then number of companies जहाँ इसकी इनकी पोजीशन ली हुई है, हाईएस्ट शेयर होल्डिंग किसमें है, रीसेंट चेंजेस कहाँ पे हुए हैं एंड रीसेंट डील्स कहाँ पे हुए, आपको पूरा यहाँ पे स्नैपशॉट मिल जाएगा. नाउ देन वी कम टू दी सेक्टोरल एलोकेशन. सो यहाँ सेक्टोरल एलोकेशन से आपको पता चलेगा कि किस सेक्टर में इनका पोर्टफोलियो का एलोकेशन सबसे ज्यादा है. एंड अगेन मार्केट कैप एलोकेशन में आपको पता चलेगा वेदर his investment is more skewed towards large cap, mid cap or small cap. Here you also get the introduction and what business he is into it. Now, if we go to the shareholding pattern, we'll get the names of the companies. Again, this is again updated every quarter. You see, यहाँ पे every quarter का है. So आपको names of the companies, उसमें कितने shares है और कितने percentage है, पूरा आपको यहाँ पे list मिल जाएगा.
अगर हम लोग की चेंजेस में जाते हैं, तो की चेंजेस हम लोग को डिपिक्ट करता है कि कौन से कंपनी में अभी रिसेंट में कोई चेंज हुआ है नहीं। सो हम लोग देख रहे हैं कि करूर वैसे बैंक में थोड़े बहुत चेंज आए हैं, राइट। लास्ट क्वार्टर इज पर द परसेंटेज होल्डिंग वाज 4.62, this time on it has came down to 4.33. So this talks about the changes. Now gainers and losers में हम देख पाएंगे कि उनके स्टॉक में जो उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसमें गेनर्स कितने हैं एंड लूजर्स कितने हैं, एंड हियर वी हैव अ टाइम फ्रेम। सो अगर 1 डे का चेक करना है हम लोग 1 डे चेक कर सकते हैं, 6 मंथ्स का चेक करना है वी कैन चेक इट फ्रॉम योर। सो वी ऑल्सो गेट टू नो हाउ हिज पोर्टफोलियो हैज परफॉर्म ओवर अ पीरियड। Yeah, this is it. So there is this question, like there are very many features in the app. So stock chart pattern and everything that will be taken up by the technical analyst people. They'll be able to guide you in a better way. So we will focus on the like fundamental aspect. So that when we are done with the investor portfolio, अब हम लोग चलते हैं इन्वेस्टमेंट थीम के टुवर्ड्स। So what is this theme about? So like there are certain stories or narratives which give move to certain sector or industry. So what we do is, or there are sometimes, so what we do is we identify those narratives or stories beforehand, and we prepare a note on the same, and also put down the stocks that are going to benefit out of the same. So हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एक थीम है, से सपोज ग्रीन हाइड्रोजन हो गया या चाइना प्लस वन हो गया या गोल्ड हो गया। हम लोग उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके अंडर में कौन कौन से स्टॉक्स है जो उससे बेनिफिट करेगा उसको भी हम लोग देखते हैं। वंस डन वी पुट इट हियर। सो आप उस पर्टिकुलर थीम जब भी स्ट्रेंथ या मोमेंट ट्रैक्शन पकड़ेगा तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स भी अपमूव देगा। से सपोज यहाँ पे शाइनिंग मेटल गोल्ड है, राइट। तो द मोमेंट वी गो इनटू इट, हम लोग पहले गोल्ड के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ देखेंगे, व्हाट इज इट अबाउट, कौन कौन से फैक्टर्स गोल्ड प्राइस को अफेक्ट करता है वो भी हम थोड़ा बहुत यहाँ देखेंगे। देन वी विल गो टू स्टॉक्स। व्हाट आर द स्टॉक्स हियर? सो टाइटन है, मुथूट फिनेंस है, कल्याण ज्वेलरी है, फिर एमसीएक्स है, मनप्पुरम है, and we can check the returns, how this particular theme has fared over the last 6 months, and we see that it has given us a decent set of, like a steady set of returns. So उसमें हम लोग अगर चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कौन कौन सा स्कैन्स के अंडर वो आता है, बी इट टेक्निकल बी इट फंडामेंटल, एंड कोई व्हाट आर दी एज, अगर कोई एज रिपोर्ट कवरेज है कि नहीं, एंड कोई न्यूज फ्लो आया है कि नहीं। So you get everything here in the theme. So I'll show one more. Okay, yeah. So this is about the theme. I'll take another example. Say green hydrogen hai, and you get a list. What is now stock का एक मैं feature I just skipped by mistake. I'll show one thing. जैसे green hydrogen से we are saying Reliance stands to it's there in this list. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा रिलायंस पे या नेगेटिव? सो व्हाट वी डू इज, देखिए आप यहाँ पे एक छोटा सा है लिखा हुआ रीड मोर, वी विल गो देयर एंड वहां पे आपको पूरा इस थीम के साथ रिलायंस का क्या रिलेशनशिप है वो आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इम्पैक्ट में it shows whether this particular company has a positive or negative relationship with this particular theme. So you get to know that, right?
सर रिकॉर्डिंग के बारे में आई एक्सप्लेन थोड़ी देर में। आपको कहाँ से रिकॉर्डिंग, इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या, हम आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देंगे। So this is about investment theme. So hope it's clear till this point. If not, please feel free to put out your questions. So investment theme, investment idea, edge reports or investor portfolio is done. Now let's go to something called company finance. तो कंपनी फाइलिंग्स क्या है? नाउ वी नो कि जब भी कंपनी कोई भी प्रेस अनाउंसमेंट करती है या कुछ भी लाइक इट कम्स अप विद एनीथिंग, तो उसको वो सेम चीज एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना रहता है जिस एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है। ठीक है, बीट एनएससी और बीएससी, राइट? सो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हम लोग ईच इंडिविजुअल कंपनी का फाइलिंग्स को ट्रैक करें। से सपोज मुझे जानना है कि किस कंपनी में एजीएम होने वाला है या किस कंपनी का सिंस Q4 हो आ गया है, तो हमें जानना है कि एनुअल रिपोर्ट किस किस कंपनी में आएगा। या से सपोज मुझे जानना है कि कौन सा कंपनी लेटेस्ट में एक्विजिशंस कर रहा है या कोई कॉर्पोरेट एक्शन है या नहीं। सो ये एंटायर फाइलिंग्स को हम लोग ने सर्टेन हेड्स में ब्रेक करके प्रोवाइड किया है। से सपोज मुझे जानना है कि एक्विजिशन किसमें किसमें हो रहा है, so I'll simply go to this tab, I'll click on this and latest date के according हमें यहाँ पे सारा updates मिल जाएगा। And now once we say the first one is JMR एयरपोर्ट इंफ्रा में एक्विजिशन रिलेटेड कुछ न्यूज आया है या कोई प्रेस रिलीज कंपनी के एंड से पब्लिश हुआ है ऑन दी एक्सचेंजेस। So I'll just click on this PDF. It will direct me to that exchange filing and मैं यहाँ से उसका पूरा डिटेलिंग्स देख सकती हूँ, राइट? से सपोज एक्विजिशन हो गया। नाउ से सपोज अगर मुझे जानना है कि बोनस शेयर्स में क्या हो रहा है, सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बोनस का भी वैसा ही डिटेलिंग्स है। और अगर हम जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो हमें डिटेलिंग्स यहाँ पे मिल जाएगा। सो वी डोंट हैव टू गो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंपनी, हम लोग जस्ट बाय द नेम ऑफ द कैटेगरी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट कम्स, से सपोज मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वांट कि मैं सबको एक एक करके देखूं। से मुझे सिर्फ जानना है एक्विजिशन में क्या हो रहा है और बोनस में क्या होगा, बायबैक में क्या होगा। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट शो, जैसे एक्विजिशन में ये जो स्टार है इसको मैं क्लिक करूंगी एंड सी दिस इज एडेड टू माय कंपनी फाइलिंग्स। मैं और एक बार शो कर रही हूँ। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस स्टार it is added to my company filings. Now the next question comes कि company filings, my company filings मुझे मिलेगा कहाँ से? So देखिए on your left hand side the third one my StockEdge बोल के एक ऑप्शन है, just click on that and यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का आइकन मिलेगा my company filings बोल के। We will click on that and you see whatever I have star marked there that gets listed out here. सारे एक्विजिशंस, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल रिपोर्ट, बोनस, बायबैक, जो जो मैंने वहां पे स्टार मार्क किया था वो पूरा यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है, राइट? सो मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मैं इसको यहाँ पे फिल्टर आउट भी कर सकती हूँ। नाउ द पॉइंट कम्स, से सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इन वन पर्टिकुलर कंपनी से मुझे जानना है कि एस्टर डीएम या एस्टर डीएम का मैं एग्जांपल लेती हूँ कि उसमें लेटेस्ट में क्या कंपनी फाइलिंग आया है, राइट? तो वो मैं कैसे करूंगी? सिंपली मैं ये सर्च बार में जाऊंगी, आई फर्स्ट टाइप द नेम ऑफ द कंपनी, ये आ गया, आई क्लिक ऑन दैट। आप देखोगे एज अपडेट्स बोल के एक सेगमेंट आएगा और यहाँ पे अनाउंसमेंट्स है। ये announcement is simply the replication of the all filings which are made in the on the exchanges of this particular company.
एंड यहाँ पर मैं आपको देख सकते हैं ये पूरा लिस्ट यहाँ पर है, ऑल दी फाइलिंग्स, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट एस्टर और डीएम का अगर कोई भी फाइलिंग आता है। सो द फर्स्ट वन वी विल सी इज कि जैसे कि यहाँ पे सीएफओ रिलेटेड कोई रेजिग्नेशन का एक्सचेंज में फाइलिंग आया है, विल सिंपली गो टू दिस पीडीएफ एंड हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं, व्हाट इज द रीजन, हु इज एग्जिटिंग द कंपनी, व्हाई, ईच एंड एवरी डिटेल। एंड आप जो ये फनल है, आप इससे कैटेगरी को सर्च भी कर सकते हैं। से सपोज मुझे जानना है कि डिविडेंड में कुछ हुआ है कि नहीं, सर सिंपली टाइप डिविडेंड एंड जो स्पेशल डिविडेंड द कंपनी हैज कम अप विथ लेटेस्ट, उसका डिटेलिंग मुझे यहाँ पे एंटायर एक्सचेंज का फाइलिंग मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। So this is about company filings on individual basis. Any questions? Okay. So once this is done, now before heading forward, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि how to go to the social platform and how to find the recording or say post your queries out there. So आपके वेब में आपको ये few ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे, 9 ब्लॉक्स, क्लिक ऑन दैट एंड आप इस सोशल देखिएगा, सेकंड में आपको सोशल मिलेगा। The moment you click here, it redirects you to the social platform. Now first question था रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। हम लोग उसके लिए टाइप करेंगे लर्न, जो है स्टॉकेज लर्न। इधर यू टाइप स्टॉकेज लर्न और लर्न आने से ही हो जाएगा। आप स्टॉकेज लर्न पे जाएंगे। फर्स्टली यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो हमारे सेशंस होते हैं, किसी को जानना था कि व्हेन इज दी स्ट्रैटेजीज और से टेक्निकल स्टफ्स आर डिस्कस, तो आपको यहाँ पे वो कब क्या होता है सेशन का आइडिया मिल जाएगा। एंड यहाँ पे यू गेट दी रिकॉर्डिंग। एंड अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके, लाइव सेशन रिकॉर्डिंग करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यू गेट ऑल दी रिकॉर्डिंग्स हियर। नाउ एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि these are the platforms where you can and what are the uses of it. Now the first one is investing ideas and the second one is trading ideas. Now they talk about stock recommendations, and there are the others that like fundamental, technical, FNO, commodity and mutual fund, where you can post your queries. अगर आपको फंडामेंटल रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप इस पर्टिकुलर क्लब में पोस्ट कीजिए, टेक्निकल यहाँ, एंड म्यूचुअल फंड इन द म्यूचुअल फंड क्लब, राइट। I'll just see. We'll come to mutual fund segment and here अगर आपको जैसे कि मुझे देखना है कि ट्रेडिंग आइडियाज, दो आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो आपको यहाँ पे टेक्निकल आइडियाज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम द experts, and same in under the investing ideas also you will get investment related highlights। एंड यहाँ से भी आप केस स्टडी देख सकते हो। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का केस स्टडी देखना है या केस स्टडी देखना है, सिंपली टाइप केस स्टडी, ये आपको फर्स्ट में आ जाएगा, एड टू सर्च, एंड इफ यू सर्च केस स्टडी रिलेटेड, all the highlights and updates gets captured under this, right? So this is what is about the StockEdge social platform.
Okay, now we will head to the SME zone. Now, what is SME zone? Well, they are same as like other companies. The only difference is कि इनमें just because ये SME में है तो इनमें ट्रेडिंग में लिक्विडिटी की थोड़ी बहुत इश्यूज होती हैं, थोड़े से रिस्की भी होते हैं. So what the exchanges have done, they have listed them on a separate platform, जिसको SME प्लेटफॉर्म बोलते हैं, राइट. सो इसका और दूसरे स्टॉक्स में यही एक दो डिफरेंसेस है. नंबर वन, these company stocks like trade in lot size. तो एक इंडिविजुअल स्टॉक आप खरीद बेच नहीं पाओगे, राइट. एंड सेकेंडली, ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं ये अपने जो रिजल्ट्स हैं एवरी क्वार्टर नहीं 6 मंथ्स में रिलीज करते हैं. सो से सपोज अगर मैं फर्स्ट वाला लूं, सो हम देखेंगे अगर फंडामेंटल सेगमेंट में जाएंगे सो आपको यहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट ही दिखेगा एंड ये लॉट साइज में होता है. सो ये सिंस दिस इज ऑन बीएसई, आई जस्ट शो कि आप एनएससी में कैसे ट्रैक कर सकते हो. आई गो टू द एनएससी नेटवर्क. हाँ, अगर हम नेटवर्क पीपल सर्विसेज में देखेंगे, देखिए यहाँ सीरीज में लिखा हुआ है एसएम, राइट. एंड दिस टॉक्स अबाउट दैट दिस इज इनटू द एसएमई सेगमेंट. एंड नीचे में जस्ट बिलो फेस वैल्यू आपको मार्केट लॉट मिल जाएगा. One thing about the market lot, it has inverse relationship with the price. Higher the price, lower is the market lot. All right. And अगर आपको SME related कोई भी questions है तो आप उसको StockEdge social में fundamental team को दे सकते हो. We will be happy to help you out with the same. Any questions still here? Or I'll move forward. I'll just wait for 1 or 2 minutes to see if there is any questions pertaining to the previous topics. Otherwise, I'll move forward. So I'll come to ETF once I'm into the mutual fund segment. Okay. So let's move to the other segment. That is the Edge Insights. So Edge Insights क्या है कि every day जो भी happening होता है, like any be it technical या fundamental, whatever the major updates on a particular company, we prepare small snippets out here so that EOD at the end of the day आप अगर इसको सिर्फ व्यू करोगे तो आपको मिल जाएगा कि मार्केट में क्या हुआ था, बी इट टेक्निकल बी इट फंडामेंटल. यहाँ टेक्निकल हाइलाइट्स दिए हुए हैं. I'll see if there is any fundamental highlight. It's mostly, see here under Bharti, there is some recent filing done by the company for fundraising. Now if we click on that, it'll take me to that particular filing और आप इसको क्लिक करके वो फाइलिंग को एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट. एंड इफ वी गो टू द सिमिलर स्टॉक्स, सो आपको फंड रेजिंग के अंडर जितने भी कंपनीज है वो भी आपको हाईलाइटेड हो जाएंगे. से व्हाट स्टॉक्स आर देयर अंडर फंड रेजिंग, व्हिच कंपनीज आर लुकिंग टू रेज फंड्स, राइट. You'll see some questions are there. Sure, sir. I'll explain investment idea once again. सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आज नहीं है टॉपिक. जिस दिन होगा दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विथ योर क्वेरी. So Pankaj sir, I'll just explain investment ideas once I'm just through with this Edge Insight segment. So Edge Insights is clear. I'll explain it once again. It gets updated EOD. That means end of the day it gets updated. पूरा दिन का whatever the technical and fundamental updates है
pertaining to any company, हम लोग उसका छोटा सा स्निपेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. से सपोज भारती एयरटेल में था, देयर इज सम न्यूज पर्टेनिंग टू फंड रेजिंग. अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, इट विल डायरेक्टली टेक अस टू दैट एक्सचेंज फाइलिंग. करेक्ट. वी विल गेट टू सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट. नेक्स्ट, इफ यू गो बैक और यहाँ पे अगर हम सिमिलर स्टॉक्स में क्लिक करेंगे, तो जितने भी कंपनीज है विच आर गोइंग इन फॉर से सम फंड रेजिंग एक्टिविटीज, उसका पूरा लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा. So before moving forward, I'll again explain the investment idea segment. Now, what is investment ideas all about? So our internal research team, they like do some back end work, and they come up with companies which they feel is very good for long term purposes, investment purposes, right? And then we prepare a thorough report on that. So once you click on investment ideas, the first you get to see is the name of the companies which are there, which are covered under the investment idea category. Now, say suppose the first one which is looking at is Tata Lexi. There is a small PDF icon. अगर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, it will take direct me to that particular report, right? Now here you get to see थोड़ा बहुत about the company के बारे में थोड़ा बहुत है, या इस क्वार्टर का कुछ highlights भी हो सकता है, right? And these all case studies get updated every quarter. Second, हमें यहाँ पे एक spider chart देखने को मिलेगा. Now this particular edge report case study is broken into certain parameters जिसके basis पे हम लोग एक company को judge करते हैं. Now, तो what are those parameters? Number one is growth. Then we can talk about profitability. Then we have efficiency, solvency, valuation, and quality, right? So उसके basis पे, keeping in view the past, present, and future performance, how the company is going to perform in the future, we assign a particular like bar, you can say a score to that particular metric. Say suppose Tata Lexi के case में हमें लगता है कि growth is a 4 out of 5, right? Solvency, since it's debt free, so हम लोग उसको 5 प्रोवाइड करते हैं. ऐसे करके हम लोग एक समेशन स्कोर पे आते हैं, where we feel is 24. We have assigned 24 to Tata Lexi. Now, for us, we feel anything above 18 or 20 is good for long-term investment purpose. Correct? Clear till here? If not, please ask questions. Yeah, I'll Vandana ma'am, I'll come to the edge score segment once again. I'll explain. Let me check. So what is edge score? Edge score क्या है? Number one, we need to see, जैसे ये spider chart में है, there are certain parameters, and based on that parameters, now these parameters, say suppose I take example growth, which is the first parameter. हम लोग उस कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, राइट? एंड देन वी असाइन अ पर्टिकुलर स्कोर टू दैट मेट्रिक. In case of Tata Lexi, we feel that growth, again keeping in view the past, present, and future performance, should be assigned a score of 4 out of 5, right? ऐसे करके हम लोग सारे मेट्रिक्स को स्कोर देते हैं. And H score is the summation of all these scores, which these sub-metrics get. Correct? And clear till here? Vandana ma'am, hope this is clear. Okay. Now, we can go to the access the report by clicking on this view report. हमें यहाँ पे फिर मिलेगा about the company, the revenue mix, and जो parameters के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, be it growth और से profitability, आप यहाँ पे उसकी explanation दी गई है, and then you can easily understand why we have provided this particular scoring for this particular metric, right? Now we come to this valuation segment. Now we do internal valuation, and then we come about then we arrive at a particular price points, be it the lower
price band or the upper price band. Here we have provided a low, like the support price band, right? Now, if we click on the edge score, हमें ये ले जाता है इस पर्टिकुलर डायग्राम पे और चार्ट पे. I'll just increase the time frame, that is so that it's easy. So इस टाइम फ्रेम पे ले जाता है, इस चार्ट पे ले जाता है, and here we can see there are certain green and red bands. Now what these bands talk about? Number one, the red band talks about when is the upper segment, and the lower one is the green one. I'll just see if there's any, what are the questions. So whenever the stock price comes towards the green zone, we say it is time to accumulate. Now, since these are all investment, the term investment is associated. That means all these stocks are for long-term purposes. They are not for short-term purpose, right? And by long-term, what we mean is more than 2 to 3 years time frame. And whenever the company stock comes near the red zone, we advise either you can like start distributing or like go like exiting the stock depending upon your in like risk appetite. Either you can fully exit or you can partially exit this particular stock, right? Clear till here? No, sir. Murthy, sir, no. The green, they doesn't show the demand and supply of institutional investors. It's the market price movement. We have, by doing our internal evaluation, we have come up with the green zone, which here I'll show again. This 6,700 to 7,000 zone. We have done it internally. We have arrived that at that valuation, which this green band depicts. And हम कह रहे हैं कि जब भी आपका stock price comes at this particular level, you can start accumulating. And once it reaches the red level here, you can see, you can like start booking your profit, or you can be a little cautious, maintain a cautious stance, or say you can partially exit some of the your holdings. So that is what the red zone depicts. As what I have, Murthy sir, as I have stated earlier, like these are, we do internal valuation process, and then we arrived at this particular price bands, right? Vandana ma'am is like, ma'am, like for short-term purposes, you can either go to the trading, like investment. You can you can also go for these for long, short-term purpose also, but these are better for long-term. So, Murthy sir, hope I'm clear on what basis this red and green bands are derived. Okay, now, yeah. Now we'll come to this spider chart again. I have already explained, so I'm not going to explain it again. Now key level. Now what this key level is, I had shown you this 6,700 is the zone, right? Now the last trading price of this particular company was 7,047.75. Now this LTP, or the last traded price, has come very close to the key level that has been mentioned in our report, and that the gap is minimum. So ये gap जो है वो 0.68% इसका difference show कर रहा है, right? And जितना जिस कंपनी का जितना gap कम होते जाएगा, be it on the upper side or the lower side, वो stock का नाम ऊपर आते जाएगा. ठीक है? I'm clear with this gap thing. Now हम लोग एक रेड बैंड का एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि आयशा मोटर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, 4,500
रेड में शो कर रहा है. Why is it so? So let's click on this and I'll just increase the time frame. So here you see the stock is trading within this red zone that has been stated in our case study. And so here you can be a little bit cautious, or you can also look to book profit as per your risk appetite. Now, these all case studies are updated every quarter, and as and when we feel like, again, depending on our internal evaluation, these scores, which the edge scores, the total scores which are depicted in this yellow circles, they get re-rated as and when we feel that there is a need for the same, right? So this is what investment idea is. And if you want to know the case study के पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकता है, सो आप एज रिपोर्ट्स के सेगमेंट से केस स्टडी में जाके आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, राइट? ओके, सो hope I'm able to explain the investment idea segment. Otherwise, if not, please put forward your questions. Then we move to the mutual fund segment. I'll just check if there is like any Murthy sir, as the key levels is nothing. These are the key levels. This is the key level, which I had shown how that we do our internal valuation, and then we come with this price zones, and that is what is key level is. So if you see this zone, that is what key level is about, right? Now we'll move to the mutual fund segment. So here mutual fund में what we first see is कौन-कौन से AMCs हैं. The major ones are all listed here. अगर आप AMC में क्लिक करते हो तो, and वो कितना AUM हैंडल कर रहा है वो भी आपको है. These are all gets updated. Latest update है 31st March 2024. Schemes उसके अंडर में क्या क्या है, so it's all listed out here. So I'll first go to SBI mutual fund. So यहाँ पे आपको segregations मिलता है classes का, equity, debt, hybrid and other. So for the time being we'll focus on the equity. So यहाँ पे सारे equity schemes listed हैं. यहाँ पे उनके AUMs दिए हुए हैं, NAV and return. ये return 3 year का है. अगर हम last 3 months का देखते हैं, so आपको यहाँ पे return का list पूरा मिल जाएगा, right? Now अगर हम इसके ओवरव्यू में जाते हैं, so what is it, entire overview मिलेगा. Then you get what are the key persons and what is the AUM like, how the AUM has fared over this particular year. आपको पूरा AUM का movement यहाँ मिल जाएगा. Then we have class wise AUM and scheme wise AUM, right? This is about the SBI mutual fund ka overview. So you get the entire SBI mutual funds overview. Now say suppose I want to know about a particular one single scheme under this mutual fund house. So I'll go to PSU, the first one. So here we get the SBI PSU जो fund है उसका NAV performance info, and यहाँ पे आपको उसका पूरा रिटर्न कैसा है, whether it's steady performing fund है या नहीं, and whether it's a erratic performing fund. So you can analyze from here. Then here is the holding pattern. Now the holding is, I'll just go to domestic equity, in which companies this particular fund has investment in.
the quantity like, and the amount, everything, the holding percentages. दिस इज अबाउट मार्च 24। अगर आप उसको फरवरी में देखते हैं सो आपको यहाँ पे वो चेंजेस भी आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। Okay, I'll again show mutual fund from the beginning. Before that, I'll just see. Yeah, Devi ma'am, it can make upper highs, but as I reiterated, that we, after doing an internal valuation study, after doing an internal evaluation study, we feel that, that particular red zone should be the upper band, or that is the point where you can go cautious. So again, I'm stating that depending upon your risk appetite, you can take your call, because these are all for long-term purposes. So I'll show mutual fund segment once again. So equities के just नीचे आपका mutual fund segment है. Here is the AMCs. Now we list all the AMCs that are there, and we also state the AUMs and the number of schemes under them. So जैसे पहला वाला हम लेंगे SBI म्यूचुअल फंड, सो आपको एंटायर मिल जाएगा कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और अदर्स में कौन कौन से स्कीम्स है इसके अंडर में, की पर्सन्स जितने हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, एयूएम का साइज क्या है, ये ऑल है। अगेन आप क्लास वाइज इसको स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एसबीआई म्यूचुअल फंड। नाउ इफ विल गो डिग अ लिटिल डीप एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके, सपोज कोई भी एक इक्विटी फंड लेते हैं एंड वी ट्राई टू स्टडी कि कैसे क्या है। सो विल गो देयर। पहला, यू गेट टू सी द NAV परफॉर्मेंस, राइट। Here also you get the entire 5-year performance of this particular fund, so you get to see कि ये कितना erratic रहा है या steady रहा है, how the performance of this fund is, right? Then we go to the holdings में domestic, firstly you get to see कि equities and other assets में कितना allocation है, and again ये every quarter update होता है, I'm sorry, every month update होता है। so आप यहाँ पे click करके changes भी देख सकते हो, right? Then we go to domestic equity. Now under domestic equity we see what are all stocks this particular fund is investing into, and holding is how much this particular fund has allocated, what portion of their fund in this particular company. This again you can change every month wise to see whether in which companies it is increasing or decreasing the stake, like I mean the percentage of holding, like। एंड ये तो डोमेस्टिक इक्विटी हो गया, अदर क्लासेस में भी आप देख सकते हो सेम थिंग। now the most important part of any like mutual fund I feel is the fund manager performance, who is managing this performance, this particular fund, उसके एक्सपीरियंस क्या है, इनके अंडर में जितना भी फंड्स है वो कैसे परफॉर्म किए हैं, whether like what the performance has been. So we see ki more or less the funds managed by this particular manager has been pretty much steady. So there is no fear of putting out my hard-earned money under this individual, right? So this is what about the mutual fund segment. And हम लोग क्लासेस में जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन अ रिस्क एपेटाइट वी कैन आल्सो सिलेक्ट इक्विटी, डेट के अंदर क्या क्या है, हाइब्रिड एंड अदर, एंड वी कैन मेक लाइक गो एंड चेक से ETF गोल्ड में कौन कौन सा ETFs है, वी कैन गो एंड चेक द सेम। So this is what about mutual fund is. Any questions?
Devi ma'am, overbought zones, and that will be better if like you ask in the technical segment. So since there are no more questions, uh, s- Kumar sir, if you have any fund related questions, please put forward in the mutual fund club. Since there are no questions pertaining to today's session, so I'll wrap it for the day. There's the last one. Okay, again, best ETF. I think the mutual fund people will be able to help you better. Yeah, Sachin sir, I'll just help you with the FFI holdings and changes. That's a very interesting segment. So I'll take Britannia, for example, right? I'll type any name of any company which you want to analyze. I'll go there. हाँ, और फिर यहाँ इसके फिनेंशियल्स के बाद ये देखिएगा शेयर होल्डिंग का टैब आता है. We will go there, right? And the moment we go there, हमें यहाँ पे पूरा एक अच्छा सा segment मिलेगा. Where under public we get the FFI, FPI. If we expand the DII, we get the mutual fund holdings, banks, insurance and other institutions का कैसा participation है इस particular company में. So we can get that for 9 quarters, and that too with pictorial representation, which helps to make better, trend analysis of the same. So you can understand how it is faring, the trend of the same. So this is where you get to see the FFI and DII participation in any particular company. So yes, with this, I wrap today's session. Thank you, everyone, and have a very nice day. Thank you.